Namaste, everyone. Good evening. Welcome to our March 2022 edition of Swar Shravan. Namaste, Manoj sir. Namaskar. The colorful festival of Holi is upon us, and I'm sure, sir, you have a colorful artist for us today, colorful and melodious. So, without further ado, if you can, with your permission, go ahead and get started. So, over to you, sir. Thank you so much, Seshadri ji, and namaskar to all present here. Uh, Seshadri ji, you mentioned about the artist of today being a colorful artist, and so he is. He has sung in different genres of music, different moods of songs, ranging right from pure classical music to thumri to ghazal to even Bollywood songs and even fusion music. So, a very, very colorful artist indeed. And an artist who has been a mentor for many of the contemporary popular artists and who sadly passed away, I think, sometime last year at the age of 89. And we all are familiar with Ustad Rashid Khan, isn't it? Isn't it? And we know that he's obviously today is one of the very popular artists, and he belongs. That is, Ustad Rashid Khansahab belongs to this gharana called Rampur Saheswan Gharana. And our artist for today is actually related to Rashid Khan Sahab, uh, meaning uh, he's his very close relative family wise, and obviously he also belongs to the same gharana Rampur Saheswan. And so, who is the artist about whom we will be talking today? None other than the legendary, the late Ustad Ghulam Mustafa Khansahab. Yes, Ustad Ghulam Mustafa Khansahab is the artist about whom we'll be talking today. And like I said, a very, very multifaceted artist uh, and very colorful artist, and someone who has uh, delved deep into so many varied genres of Indian music. So, as is our custom, we will start with his classical renditions first, and the rag that we'll be starting first today is a rag that has been adapted into Hindustani music from the south, but is a very popular rag now in Hindustani music. And this is Rag Hansadhwani. Yes, Rag Hansadhwani, in which Khasab will be presenting a Bada Khayal in Vilambit Ektal, Sapne Mein Aaye, and that will be followed by a very popular Chota Khayal in Drut Teen Tal, that is Lagi Lagan. So let's start with Ustad Ghulam Mustafa Khansahab rendering Rag Hansadhwani. And of course, Hansadhwani is a very popular rag. Ni sa ga re sa re ga pa ni pa ga sa ga re ga re ni pa sa re
So this is Hansadhwani, pentatonic scale, right? So here we go. Khansahab with rag Hansadhwani. Kind. 01 Hansadhvani. MP. Selected. Slash. Back button. Century Link P6 weak negative 5G. 3 of 3. Speech off.
lagi lagane pati sagi san lagi lagane pati sagi san parabe sokha adigane lagi lagane pati sagi san lagi lagane pati Sagi sada parame sokha adigane lagi lagane 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 buddhi sagi sada lagi lagane buddhi la la lagi lagane buddhi Ang sugandang chandal madhete nagadare dirgananan anjar pavanita amar vaniti pati kaja lagi lagan pati sage sad lagi lagan pati Wow, that was Rag Hansadhwani. See, now you notice a very typical feature of this gharana, Rampur Sahaswan gharana, and you will notice this with some of the singers from the same gharana as to how they take these fast pieces in sargam in laikari form, as you heard Khansahab do. It's a very unique feature of that gharana, meaning if the lay is at a particular pace, they would go much faster when it came to singing some of these patterns, either in sargam or in the form of bol tan, meaning singing tans using the words of the composition, right? So that's a very unique feature of this gharana. So that was Rag Hansadhwani from Khansahab, and then now let's move on to a gigantic rag for the next piece, a real grand rag, Rag Darbari Kannada. Yes, but of course we will not be hearing a Bada Khayal in it, but we'll be hearing a Drut composition from Khansahab in Ek Tal, 12 beats cycle. So here it goes, Khansahab with Rag Darbari, and of course again a very very popular ni re sa re ga ma re ni
sada ni pa sa. So there's a lot of andolan, that is shaking of the notes going on, especially on Gandhar and Dhaivat, which is a real characteristic feature of this rag. So here we go, Khansahab, with rag Darbari, Drut Ek Tal. Speech on. File info. 02 Dargari. MP. Select. Speech off. Kaze gamu mein jiya ki pir, kaze gamu mein jiya ki pir, kaze gamu mein jiya ki pir, kaze gamu mein jiya ki pir. कासे कहूँ मैं जिया की पीर. Chin chin kanj bar aaye jano jiya dhir, kaze gamu mein jiya ki pir, kaze gamu. Dani 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 baba dani baba dani baba dani baba dani saka se kam mein diya ke pir ka kam mein dani da dani da dani da dani 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 da dani dani baba dani dani baba pani baba मन के मीत नाई आए रस रंग मोरज अचलाए नैनन सो बरस नीर क्या बात है. मेरी आगे Aha, that was a real electrifying rag darbari, wasn't it? With a lot of fast sargam
patterns and akar tans. That was so nice. So um, it's always is such a learning experience, isn't it, for all of us when we listen to all these different singers from different schools of music called the gharanas, as to how they present the same rag in different uh, patterns. And uh, even if you may not be technically aware of all these things, but if you actually carefully listen to these singers from different gharanas singing the same rag. So if you just take, for example, Darbari being sung by Khansahab or being sung by other singers from other gharanas, you will notice such a distinct difference, and still keeping the flavor of the rag intact. So that is the amazing beauty about our music. So the next one is a morning melody. Let me just sing it properly. I'm sure all of you will be able to recognize this one. Yes, I'm talking about Rag Bhairav. Absolutely. So here we listen to Khansahab singing a composition in Drut Teen Tal, a very popular composition from this gharana that again many of the singers from this gharana sing. Jag Kartar Re Tore. So here we go with Khansahab Rag Bhairav, Drut Teen Tal. Speech on. 03 Farad. MP. Select slash. Back button. जग करता रे तू जग करता रे तू और बधा बुद्धि रे जग करता जग करता जग करता नया बोरी मजदार बवर दे तुम्हें करोगे बेड़ा पार जग धरी 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 सगा मगर जग तारे धनी धरे धनी सगा मगर धनी जग तारे जग करता रे जग करता रे जग करता रे तू जग करता रे
हाँ Selected. So that was Rag MP3. Bhairav. Speech off. A very short but a crisp composition in Drut Teen Tal, right? So now comes the most interesting part of our session, and that is the interview with the artist. So without any further delay, let's get into knowing Khansahab more. And at the end of this interview, there are going to be short clippings of those great artists from today's times that I mentioned at the beginning of the session, whom Khan Sahab has mentored. We will hear what they have to say about him. So, as soon as the interview finishes, you will hear some very, very familiar voices. And yes, I think it'll be good guesswork for all of you. So, let's start with Khan Sahab's interview. Speech on. File 04 interview. MP. बहुत बहुत खुश आमदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम शख्सियत में उस्ताद जी। शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश जिस तरह से की उसके बारे में, और छुटपन के कुछ प्यारे से वाक़े अगर हों तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। भाई, हमें हमारे वालिदैन ने खेलने का मौका नहीं दिया और हमारे खेल को हमारे गाने की तरफ रुजू कर दिया, मोड़ दिया। हमारी वालदा हिंदुस्तान के बहुत ही मायनाज और बड़े गवैये उस्ताद इनायत हुसैन खानसाहब सहसवान वाले की साहबजादी थी और हमारे वालिद साहब उनके भाई के लड़के थे। तो उनकी ये इच्छा हुई कि हम गाएं, तो हम जैसा थोड़ा सा बोलने की कोशिश करने लगे तो हमारे वालिद साहब ने हमें सीने पे लिटा लिया और सारे गामा कहलवाना शुरू किए। और सारे गामा की जगह हम अल्फाज न बोल के या करके कुछ करने लगे। तो वहाँ से हमारी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हम थोड़ा और वो हुए तो फिर पढ़ना उर्दू हिंदी, और उसके साथ में जब हम वहाँ से लौट के आते थे तो हमारे वालिद साहब ने सख्त ताकीद कर दी मोहल्ले के बुज़ुर्गों से भी कि ये बाहर देखें तो इनको डांट के अंदर कर देना। तो और अगर हम घर में रियाज नहीं करते थे तो बावजूद इसके कि हमारी वालदा बहुत प्यार करती थी, अब्बा से ज़रूर कह देती थी ताकि हमारी मरम्मत की जाए, डांटा जाए, पिटाई भी हुई, पिटाई भी हुई। तो बहरहाल वो उनकी डांट और वो पिटाई जो है वो आज मेरी ज़िंदगी का संगे मील है, बहुत बड़ी नेमत है। वैसे अगर देखा जाए तो फिर आपकी फिर बाकायदा तालीम शुरू हुई होगी। किन किन उस्तादों से आपको सीखने का मौका मिला? सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और उसके बाद मेरे ताऊ उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, और उनके इंतकाल के बाद उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से सीखा मैंने। माशाल्लाह। बस सारी मुकम्मल तालीम उन्हीं लोगों ने मुझे दी है और इतनी अच्छी तरह से रियाज कराया, इतनी अच्छी तरह समझाया। वालिद साहब ने भी, ताऊ साहब ने भी और खान साहब ने। रामपुर सहसवान घराने से आपका ताल्लुक़ है और अगर ख़ास तौर पर सिर्फ इसी घराने की खूबियों की बात की जाए तो उसे कैसे बयान करना चाहेंगे आप? देखिए, हर घराने में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं और हमारे घराने में एक जो वो है, जैसे मैंने कहा कि अब बड़े बड़े उस्तादों की सरगमे हैं और कुछ मुहर्रम में गाए जाने वाले सोज़ मरसिए हैं, उनकी बंदिशें इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि हमारे यहाँ गाने बजाने में बोलते हैं गला निकालना। अच्छा। ये एक परिभाषा है।
तो उससे गला जो है वो बहुत कंट्रोल में आ जाता है। कोई एक बंदिश अगर आप थोड़ी सी गुनगुनाना चाहें हमारी ऑडियंस हाँ के लिए। देखिए, वो एक बंदिश है जो मैंने अभी गाई थी इसमें, और मेरे बच्चों ने भी गाई थी और मेरे पोते ने भी गाई थी। फैज़ मुस्तफ़ा। अच्छा। आओ 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 बलमा, आओ 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 बलमा। आपने बॉलीवुड में भी तो बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, तो वहाँ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा बॉलीवुड के साथ? बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बड़ी इज्जत दी। मेरी सबसे पहले मैंने जो फिल्म में गाया वो मराठी फिल्म थी, छंद प्रीति सा। अच्छा फिर एक लावणी है, चीज़ है जी। गाने की किस्म, उसकी एक लाइन थी, सुंदरा मना मदे भरली, उसमें मैं गाया, बहुत पसंद किया गया। फिर वहाँ से मैं नूरजहाँ में गाया, बदनाम बस्ती, उसका एक गाना बड़ा वो हुआ था, सजना काहे नहीं आए। हाँ। नूरजहाँ में एक पर्शियन वो था, नूरजहाँ में क्या था? पर्शियन में क्या था? वो उसके बोल थे, मर्दे खुदा ब मशरिक़ व मग़रिब गरीब नीस्त, चंदा के मीर अवध हमा मुल्क खुदाए उस्त। अच्छा। इसका मतलब यह है कि ए मुसाफिर, तू अपने आप को कहीं मुसाफिर मत समझ, क्योंकि तुझे और इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। वाह। अब मुझे बताइए कि आपकी आने वाली पीढ़ी में अब आप किसे तैयार कर रहे हैं, और क्या कुछ आपके ख्वाब हैं अब आगे के लिए? मेरा ये ख्वाब है कि हमारा म्यूज़िक जो है ज़िंदा रहे, और मुझे यकीन है कि वो कभी नहीं मिटेगा। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो ये हमारा म्यूज़िक जो है वो एक दरख्त है जो हमेशा पत्ते नए आते रहते हैं, फूल आते रहते हैं, फल आते रहते हैं। I really like to learn more from him, but I think as a teacher, sometimes knowledge is from heart to heart. It's not physical knowledge. It's also dua. When I heard Khansahab's sons, Khansahab, everybody in the family, I was very motivated to do an album. So I was very glad that we've taken some of those ideas and performing it gloriously for Coke Studio and MTV. And people who had listened to that stuff seem to love the ideas, both ideas. And the admiration for Khansahab and his sons and the grandson has gone multiple folds. Always wants to teach, wants to give, and rarely does he wants to take anything. He always wants to give, and that's a great quality. गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास गई थी, मेरी नीस है रचना, वो उनसे गाना सीखती थी। तो उसने मुझे कहा कि दीदी आप चलिए मेरे साथ खान साहब के यहाँ। मैं वहाँ गई तो मैंने उनको बताया कि खान साहब मुझे कुछ गाने में तकलीफ होती है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बेटा ऐसे ही होता था, पर मैंने जो किया वो तुमको मैं सिखाता हूँ। और उन्होंने मुझे वो बात बताई कि क्या होता है। मैं तो कहूँगा कि मैं उनके I am like his eldest son, and I've been with Khansahab for the last 30 years. I know Khansahab for 30 years, and whatever I sing, whatever I am, is because of Khansahab. जो भी उन्होंने सिखाया, he is a legend of Hindustani classical, especially ख्याल गायकी, and we are all honored, privileged, lucky and proud to be his students and be associated with him. खान साहब को मैंने पहली बार सारेगामा में जब मैं एंकरिंग करता था तब देखा था। तब इनको जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे लगा था कि मैंने अपने उस्ताद को देख लिया है पहली बार। मेरे दिल में बहुत इच्छा थी कि मैं किसी बहुत गुणी इंसान से सीखूं। 97 में फर्स्ट टाइम मैंने इनसे गंडा बंधवाया और मैं इनसे सीखना शुरू किया, विधिवत सीखना शुरू किया। जो कुछ भी मैं इनसे ले पाया, जो ये मुझे दे रहे थे और जो मैं इनसे सीख पाया, मेरी पूरी गायकी बदल गई, मेरा रियाज का तरीका बदल गया। और गुरुजी से मिलके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये मुझे ना मिलते तो शायद जो मैं आज गा रहा हूँ उसका आधा
आधा भी मैं नहीं गा पाता। सचमुच बहुत सारी चीज़ें जो उनके पीठ पीछे उनके बारे में हम कहते हैं वो आज कह सकते हैं, लेकिन मैंने भी अपने पिताजी को खोया when I was about 14, और उसके बाद कई साल तक यूं ही सोचता रहा कि बस यही है, लेकिन गुरुजी को पाकर I found my father back. I am such a wonderful father and I am such a horrible son. गुरुजी से बहुत कुछ सीखने मिला है और अब तो शुरुआत है और बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। Wow. Selected. 04 interview. So, Speech off. So I'm sure all of you recognize those very, very familiar voices, isn't it? Towards the end of the interview, who were mentored and who were influenced by Khansahab so immensely. So isn't it such an amazing honor and privilege for us to be doing a program on Ustad Ghulam Mustafa Khansahab? So now, after having heard his pure classical music, and as I mentioned at the beginning, a very, very colorful artist who has ventured into various genres of music. So let's start with a very wonderful thumri that we'll be listening from Khansahab. Rag Mishra Khamaj. It's actually called a dadra, meaning a composition that is sung in dadra tal. So that's why this specific genre of semi-classical music is actually called dadra. So Khansahab sings the typical Purab Ang Thumri. So Purab Ang Thumri has a very lilting touch to it. So something like so a very lilting and a very gliding kind of singing of swars in the Purab Ang Thumri. So let's listen to this Dadra by Khansahab. Ab maan jao saiya. And look at the way he says maan jao, trying to convince his dear one to agree, and the way he says it in various intonations. So very fascinating to hear. So this is Dadra Rag Mishra Khamaj by Khansahab. Speech on. File in 05 Misra Kamaj Dadra. MP3 9.8 M. Select अब मान जाओ सोइया, अब मान जाओ सोइया, परू मैं तोरे पैया, अब मान जाओ सोइया, अब मान जाओ
साखी सब देख हंसत है सबकी साखी सब देख हंसत है बारी बदलर कैया बारी बदलर कैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया मान जाओ सैया मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया अब मान जाओ सैया Wow. See now, in the previous presentations of Khansahab's classical music that we heard those real fast, rasping, rattling tans from him. And look at this very sweet and a soft, lilting presentation of this Thumri. Such a beautiful expression that he presented for us. And that is the greatness and the beauty of all these legends, right? That they can express such varied moods in such a masterly fashion. A true inspiration for all of us, isn't it? So, the next one is a ghazal that we'll be listening from Khansahab, based on Rag Yaman, set to Kehrwa Tal. So, after we heard this Dadra, now here we go with ghazal from Khansahab. And Speech here on. it goes. 06 Ghazal and Yaman. MP. Select. बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ सितारों सजी महफिल न उठ जाए चले आओ बहुत बेचैन है तुम्हारी उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है तुम चले आओ उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है तुम चले आओ बहुत बेचैन है दिल
उदासी की हदें अब छू रहे हैं, याद के नगमे उदासी की हदें अब छू रहे हैं, याद के नगमे कहीं हम बन के एक आंसू न बह जाए, चले आओ कहीं हम बन के एक आंसू न बह जाए, चले आओ बहुत बेचैन है दिल. Wow. Another such a classic example of Khansahab's very soft intonation and his expression, isn't it? बहुत बेचैन है ये दिल, तुम चले आओ. वाह. So, to conclude our session for today, we have a Bollywood song sung by Khansahab. Well, it's actually a classical ragamala. Ragamala, as all of you know, meaning a song consisting of a series of rags. And this is a very, very popular ragamala from the super hit movie Umrao Jaan. And basically, the scene is that the guru is teaching his disciples rags at various times. So that's why we will hear rags starting from the early morning rags all the way till the late night rags. And so this is the ragmala set to teen tal, 16 beat cycle. And as each rag unfolds, I will mention the name. So we start with Ramkali, which is very similar to Bhairav, but a little different. Would just like to present a little bit of Ramkali so that you have an idea. It's not a very popularly sung rag, but as I said, very similar to Bhairav. So Gama dha dha pa ma pa dha dha ni da pa. The usage of Tivrama and the usage of Komal Ni, which is not done in Bhairav. So Gama dha dha pa ma pa dha ni da pa dha ma pa ga re ga ma pa ma re re sa. So this is Rag Ramkali. So let's start this Ragmala with Ramkali, and as I said, as each rag unfolds, I will just mention the name. So here we go. Speech on. File 07 Ragmala from Amrital. Select slash.
Rag Todi. Afternoon Rag, Shuddha Sarang. Rag Bhim Palas. Rag Yaman. Rag Malkons. Late night. And the final Rag Bhairavi. Wow. What an amazing presentation that was. Like I said at the beginning of the program, a very, very colorful artist. And let's all bow down to this legend, Ustad Ghulam Mustafa Khansahab, and really draw inspiration, especially for us students of music, as to how to intonate ourselves and adjust ourselves to various genres of music and not get stuck and be rigid with any particular genre of music. And it also teaches a very important lesson of life, isn't it? That even in life, it's never good to be rigid. It's always good to move on and always try to be open in terms of learning new stuff and even unlearning stuff if required. So with this,
we conclude session number 19 of our Swar Shravan series. The next session will be held on the second Sunday of April, and that's going to be April 10th. Same time from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Eastern. And I'll hope to see you all then. It will be, as you all know, a legendary female vocalist then. So, thank you so much for your presence for today's session. And until we meet in April, happy listening and stay safe. Namaskar. Namaskar. Thank you. Yeah. Got it.